सिंथोल के हमने डियोस तो यूज़ किए हैं, लेकिन क्या इसका बियर्ड ऑयल आपके हार्ड अर्न मनी के वर्थ है? क्या ये अच्छा परफॉर्म करता है? वील फाइंड आउट टुडे, स्टे ट्यून्ड। Hey guys, welcome back to the Bearded Chokra. मेरा नाम है abhijeetbhansali and this video is again not sponsored by any brand. ये मैंने खुद के पैसे से प्रोडक्ट खरीदा है for personal use and the opinions that I'm going to share with you in this particular video are completely mine. So with that out of the way, let's get straight into today's review. And this beard oil is available in a quantity of 35 ml. इसके अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ, it's a 3 out of 5 from my end. I don't like it. The cardboard box is still okay. But the bottle itself, it's a plastic bottle. It should have been glass. Beard oil is always supposed to be in glass. It's a very poor packaging, especially for the price that it comes at. And now if I talk about the fragrance over here, it's a good fragrance. Cinthol hai. You know they make deos and those deos smell decently good. So यहाँ पे fragrance again 4 out of 5. It's a good fragrance. It's a mild, slightly musky, citrusy fragrance. So that way they've done a decent job with the fragrance. Now we have to go into the ingredient list. The sad part is that ना उनके box पे ना उनके bottle पे there is no ingredient list. But I'm sharing something with you on the screen right now. तो वो देख लो and then हम conclusion में इसके बारे में और बात करेंगे. So now talking about the conclusion, I hope you've seen that ingredient list. सबसे पहले the feel of this product, it's a very light oil, completely colorless है and बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टिकी फीलिंग है इसकी, स्लिपरी टाइप फीलिंग है. अगर मैं ट्रांसफरेबिलिटी की बात करूँ 4 out of 5, डैम गुड ट्रांसफरेबिलिटी. मतलब लिटरली आपके हाथ जो है वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएंगे आफ्टर यू मसाज इट ऑन योर बियर्ड. दैट वेज वेरी गुड जॉब. फील ऑन द बियर्ड की अगर मैं बात करूँ, आई एम गोइंग टू गिव इट अ 3.5 out of 5. इट्स ओके, इट्स डिसेंट. यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थिक फीलिंग या फिर ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया है आपने, वैसा टाइप का फीलिंग नहीं आएगा. इट्स अ kind of a very natural feel to your beard. And next, if I talk about shine, I'm going to give it a 1 or a 2 out of 5. It doesn't provide a lot of shine to your beard. उल्टा बहुत ही ज़्यादा एक matte look देता है आपके beard को. If I talk about the softness, I'm going to give it a 3.5 out of 5. It's decent. Thickness की अगर मैं बात करूँ, then I'm going to give it a 3 to 3.5 out of 5. Not that good. It does coat your hair, but इतना ज़्यादा thickness provide नहीं करता. And if I talk about nourishment, आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी और जो लोग मेरा चैनल काफ़ी टाइम से देखते हैं उनको ये इंग्रेडिएंट लिस्ट का थोड़ा बहुत तो आइडिया है. I'm going to give it a 1 out of 5. I actually wanted to give it a 0 out of 5, but I'll still give it a 1 out of 5 because there might be a few drops of argan oil and almond oil in it. But yeah, so as far as nourishment, there is hardly any nourishment in this particular beard oil. It is filled with, as you've seen, it's filled with silicones and emollients and all of those things. तो इसमें ऑयल के नाम पे आमंड एंड आर्गन दिखा रहे हैं विथ परफ्यूम एंड टोकोफेरॉल एज एडिशनल इंग्रेडिएंट्स, बट इट्स नॉट गोना नरिश योर बियर्ड फॉर श्योर. अब मैं इसका अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, देन एट अ प्राइस ऑफ 330 rupees फॉर 35 ml, price wise it's still in that sweet spot as far as the Indian market goes, but it comes in a plastic bottle. And for a plastic bottle 330 rupees is way too much, even though इसको Cinthol की branding मिलती है, but I don't think it's worth it at all. Secondly, the thing that pisses me off the most about this product is that how in the world is this product even being allowed to sell in the market without an ingredient list. पूरे बॉक्स के ऊपर, पूरे बॉटल के ऊपर सिर्फ इतना ही लिखा है argan oil nourishes the beard. It's a very generic statement. इससे मुझे ये भी नहीं पता चलता कि इसके अंदर argan oil है. It's a very generic statement. More than that, I had to actually go fish for this, ingredient list, and I was lucky कि उनके website पे ही मुझे इसकी ingredient list जो है वो मिल गई, and that is what I showed to you in the earlier part of this video. Overall, 330 rupees for a plastic bottle and a bottle filled with silicones is not at all worth in my opinion. मैं इसको तो personally use नहीं करने वाला हूँ, but
आई नो देर आर सम ऑफ यू आउट देयर जिनको एक बियर्ड सीरम चाहिए होता है ड्यूरिंग स्पेशली द इवनिंग टाइम. You know, when you've applied beard oil in the morning, a separate good quality beard oil जिसके अंदर actually कुछ oils होते हैं, and in the evening time you just want to, you know, add a little bit of softness to your beard and just coat the beard hair and not go to the skin. If that is something that you want to do and if you don't mind or don't care about the ingredient list and you're okay with silicones, तो फिर you can give this a shot. So all in all, I would say कि इट्स नॉट वर्थ इट. फिर भी अगर आपको खरीदना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ मैं. यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड डू योर ओन रिव्यू रीडिंग ऑन Amazon. जो भी करना है आप वो कर सकते हो. एंड दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, let me know your feedback and it really motivates me to, you know, keep producing content like this. बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें. सारे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स, ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. विद दैट सेड, जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.